Just remember Allah is there, always there to lend you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، میں ہوں امتیاز نقوی۔ آج ٹاپک جو ہے وہ، جیسے میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ میرے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے ٹو پروموٹ پازیٹیو امیج آف پیپل ود ڈسیبلٹی، ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ دا سروسز اور پروموٹ پازیٹیو ہیلتھ میسیج اینڈ ڈسکس کمیونٹی ایشوز۔ تو آج جو ہے ہم ایک ایسا ٹاپک لائے ہیں جو کمیونٹی ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔ جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاور آف کلیکٹیو ایکشن۔ تو یہ ہمارے جو آج کے جو گیسٹ ہیں یہ ہیں عبد الماجد صاحب ہیں، یہ سی ای او ہیں شیعہ پروفیشنل نیٹ ورک، اور ان سے آج جو ہے گفتگو ہوگی۔ یہ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ شیعہ پروفیشنل نیٹ ورک کیا ہے، یہ کب اسٹیبلش ہوئے ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، تمام تفصیلات جو ہے ان سے ہم جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر ہمارے گیسٹ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے 020454029993۔ اس فون پر آپ کال کر کے ہمارے گیسٹ سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے یہ دنیا بھر میں لائیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں، اور اس کو آپ یوٹیوب، ہدایت ٹی وی یوٹیوب، اور ہدایت ٹی وی فیس بک، ہدایت ٹی وی کا ایک اپنا باکس بھی ہے جو جیسے کہ اسکائی باکس ہے، اس طرح کا ہدایت ٹی وی کا ایک باکس بھی ہے، اس پر بھی ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری جو فیس بک ہے اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے پاکستان میں میرے خیال میں کیبل پہ اور وہاں پہ ڈش پہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مختلف جو ہے اس کے فورمز ہیں جہاں پہ یہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم واضح خواہ ہیں کہ ہم نے آج کسی خاص ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پروگرام وقت پر شروع نہ کر سکے۔ ہم انشاءاللہ جو ہمارا ٹائم ہے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ہم 2:15 بجے تک اس کو پروگرام کو لے جائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ، آپ 2:15 بجے تک رہیے انشاءاللہ۔ آپ جو آج ہمارے گیسٹ گفتگو کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے، اور اس میں بہترین انفارمیشن جو وہ آپ کو ملے گی۔ تو چلتے ہیں جی اپنے گیسٹ کی طرف۔ ہمارے گیسٹ ہیں عبد الماجد صاحب ہیں، یہ سی ای او ہیں شیعہ پروفیشنل نیٹ ورک کے، اور ان کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے جو وقت دیا ہے اور شیعہ پروفیشنل نیٹ ورک کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ جی عبد الماجد صاحب، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام روشنی ہدایت ٹی وی پہ حصہ لیا ہے، اور آج آپ کی گفتگو جو ہے ہم سنیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری معلومات میسر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عبد الماجد صاحب، بہت بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت دیا ہے، اور آج آپ گفتگو کریں گے شیعہ پروفیشنل نیٹ ورک کے حوالے سے۔ مجھے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ شیعہ پروفیشنل نیٹ ورک کیا ہے، کب اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ اگر تمام جتنے میں میرے کوسچنز ہیں ان کو آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا 1 گھنٹہ آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ السلام علیکم viewers. وعلیکم۔ Why did we establish the Shia network? Shah Saab, can I speak in English, please?
یہ آپ اردو میں زیادہ اگر بہتر کریں تو انگلش بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پروگرام جو ہے اردو کا ہے تو اگر جی آپ مگر اردو بولتے ہیں تو اردو بول لیں، نہیں تو انگلش میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اردو بھی بولوں گا اور جو ہے نا انگلش میں سٹارٹ کروں. انٹروڈکشن دے دوں نا. ٹھیک ہے. اچھا. Shia network was established in 2025. I met a lovely friend called Sajjad Hussain from Concordia Financial Planning Limited, a dual chartered financial advisor and director. And me and Sajjad had a lovely conversation, and Sajjad asked me a question, Baijan, I wish to involve with my community and help in many ways. And I want to participate with my community. And we said, that's beautiful. We will organize something. So we arranged a meeting in Bradford with other five colleagues of ours. And we sat down, and Sajjad mentioned that, being a professional chartered accountant, he wanted to be involved. So we decided, to make a Shia professional network, organization, or group, so we can work alongside all the professionals in every field, like doctors, barristers, accountants, teachers, health dietitians. So we thought this is a requirement in the community which we are lacking today. We need these professional people to participate in our Shia community and help the community to ease some obstacles which are coming up in future. For example, Islamophobia, hate crime. We're also facing new 2026 tax credit. So we are trying our best, to our professional to get involved and help each other on the forum, which is needed. And we will be working alongside the council. We will be working with West Yorkshire Police. We will be working with the NHS and all the departments. So we will show our Shia people potential and their profession. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ جی. اچھا، یہ تو آپ نے کافی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے جو اس کے راز مقاصد شیئر کیے ہیں. تو آپ نے کونسل کی بھی بات کی ہے، پولیس، NHS اور دوسرے اداروں کی بھی باتیں کی ہیں آپ نے. اچھا، چونکہ آپ کی گفتگو سے بھی میں کچھ کوشچن جو ہے وہ میں آخذ کروں گا اور وہ آپ سے سوالات کروں گا کہ آپ نے کونسل کا جو بتایا ہے کہ جو فیملی وہ جو ٹیکس کریڈٹ کے حوالے سے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ اس سے ہماری کمیونٹی کو کس طرح کا فائدہ پہنچے گا. سب سے پہلے جو ہمارے بھائی ہیں سجاد حسین کنکوڈا کے، وہ جو ہے نا چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے نا اپنی قوم اور ہمارے جو پروفیشنلز ہیں اپنی فیلڈز میں، ان کو وہ مدد کر سکیں. اور ایسی ان کے پاس چند چیزیں ہیں جس میں جو بزنس مین ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگلے سال جو ٹیکس آ رہا ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور پروفیشنل باڈیز جو ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. اور سجاد حسین ایسے عظیم انسان ہیں کہ وہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شیعوں کو فائدہ ہو. اچھا، یہ شیعہ کمیونٹی ہی کیوں؟ کیا دوسرے لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہماری جو بہت ساری کمیونٹیز ہیں، ایشین ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انڈین ہیں. تو آپ نے شیعہ کمیونٹی ہی کو کیوں فی الحال، کیا آپ سٹارٹ جو لے رہے ہیں شیعہ کمیونٹی کے اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا صرف شیعہ کمیونٹی پر بھی ہی فوکس کر رہے ہیں؟ نہیں، شیعہ ہم پہلے تو اپنی جو شیعہ کمیونٹی کو جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا یہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور مزید آگے بھی ہم جو ہے نا دوسرے جو ہمارے
अहले सुन्नत के भाई हैं, बंगाली भाई हो गए, इंडिया के मुसलमान हो गए, हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। मगर हमारी कम्युनिटी को इस वक्त ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं कम्युनिटी का काम करता हूँ। मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ कि जितनी कम्युनिटीज़ हैं हम शियों को जो निगलेक्ट कर रही हैं, हम कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। जितनी इनकी फंक्शंस होती हैं ये हमेशा जो है ना अपने जो दोस्त यार अजीज़ होते हैं अहले सुन्नत के, हमेशा उनको जो है ना इन्विटेशन देते हैं। और हमारे शिया भी माशाल्लाह ब्रैफर्ड में माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी इन्वॉल्व हों, जैसे सब मुसलमान मिलजुल के काम करें। तो इसमें इसमें ये एक हमारी अपनी सोच है कि वी बिन नेग्लेक्टेड। मिसाल है कि आपको शाह साहब आपको मिसाल देता हूँ कि वी डिड प्रोटेस्ट in Bradford regarding Parachinar, and we had some beautiful scholars and few community members. We attended the Consulate of Pakistan, and all the scholars forwarded the concern in Parachinar. But at the end, I concluded and I said, Mr. Safraz Ahmed, I am very disappointed that you do not involve my community in any form of celebration, or you do not look into them that they are part of the community and they're Pakistanis. So it's very vital. We can start with our Shia community, and inshallah, we will be involved in other communities in future. But firstly, we need to build up ourselves. बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपने एक और भी आपने गुफ्तगू में एक बात किया है, हेट क्राइम। और हेट क्राइम जो है उसको उसके मुख्तलिफ जो है उसकी शक्लें हैं। हेट क्राइम जो है वो मज़हब के बिना पर भी हो सकता है। अच्छा, आपके लिबास का और कल्चर और जिसके अलावा सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह। तो आपने जो हेट क्राइम की थोड़ी सी आपने तस्वीर किया, उसकी थोड़ी डेफिनेशन बताएंगे कि हेट क्राइम जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए कि हेट क्राइम होता क्या है? अच्छा, ये जो हेट क्राइम है ना, ये आज आपको पता है ड्यू टू द इस्लामोफोबिया, दिस इज द बिगेस्ट इशू द मुस्लिम कम्युनिटी आर फेसिंग. Not only Muslim community, anybody who's Asian or Afro-Caribbean. At place of work, whether you're working in hospitals or whether you're working in the private sectors, people are facing, like Shaji just mentioned, job. That is a big issue. And then you got schools where children are categorized as Asians, and the teachers do not pay attention with the Asian students. So we want to look at where the problem is, and that's why hate crime is very important that our community understands. If we face any obstacles, any problems, we must report to our local police, because this can be very, very serious. People can get injured, lives can be in threat. So our community is neglecting some issues where we do not involve the police when the police is there to give you services. तो क्या के do you think the police supports you when you make a complaint? अगर आप जब कोई कंप्लेन करते हैं तो पुलिस की जो रिस्पांस है, पुलिस का रिस्पांस जो है वो कैसा है? अमूमन ये देखा गया कि अगर कुछ छोटी मोटी बात होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि खुद सॉर्ट आउट कर लें, हमारे पास इतने कोई नफरी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो आपके साथ किस तरह कोऑपरेट करते हैं, कैसे रिस्पांस करते हैं? Shah Saab, if you recall back in 2 years ago, when we had a film called Lady of Heaven, and the Lady of Heaven, which was cinemaed in Bradford, and we had information from the outside resources that they will be attacking and abusing and insulting the Shia community due to the film. So I gathered all the information as I work also as it's called IAG. IAG means Independent Advisory Board for West Yorkshire Police. So I informed
West Yorkshire Board regarding the issue we are facing and we will be facing due to the film which is cinemed in UK. So we arranged the police arranged a meeting inside our Imam Bargah, and they assured us that all your community will be safeguarded and they'll make sure all the places of worship like Anmine Hadriya or other Imam Bargahs will be protected. So it's very important that we communicate with them and tell them our problems. And they are willing to support us, and especially the Chief Inspector, Mr. Padwell, is a Chief Constable of West Yorkshire Police. And we have other colleagues I work along with, Mohammed Anif and James Elliott. And now, mashallah, they fully support our community or any kind of problem we have within Imam Bargah or outside regarding being Shia, being targeted. They're always there to support me. اچھا So we need. May I finish? Shaji, plus, right, every year we get 3 to 4 police officers who escort our Julus of 10th of Muharram, and that is through my communication with West Yorkshire Police. Make sure that on the day our sisters and mothers and the Julus is safeguarded. اچھا آپ نے جو میں نے کوشچن لکھے ہوئے تھے وہ تو ابھی انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا اگر وقت ملے گا تو چونکہ آپ نے جو گفتگو کی ہے تو میں نے اس میں سے کچھ کوشچن جو ہے وہ چوز کیے ہیں ہیٹ کرائم کے حوالے سے. کیا ہیٹ کرائم جو ہے وہ جو اس ہیٹ کرائم از موسٹ کامن اینڈ موسٹ پیپل نو واٹ از ہیٹ کرائم. تو ڈو یو نو واٹ از میڈ کرائم؟ میڈ کرائم کے بارے میں بھی آپ کو علم ہے؟ اس بارے میں اگر نہیں ہے تو ہم مختصراً جو ہمارے ویورز کو تھوڑی سی آگاہی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو کوشچنز ہیں اس کے اندر. نہیں آپ آگاہ کریں. اچھا ناظرین، جو ہیٹ کرائم جو ہمارے کیسٹ نے ذکر کیا ہے، ہیٹ کرائم، یہ تو ایک موسٹ کامن ہے. یہ people have been discriminated whether they are Muslims or maybe the other religions. اس کے علاوہ جو ہیں وہ due to disability people have been discriminated due to their culture اور ان کے جو لباس ہے، ان کے جو بہت ساری وہ چیزیں جو اس میں وہ لوگوں کو پتہ ہے زیادہ تر کہ ہیٹ کرائم جو ہے وہ کیا ہے. لیکن many people are not aware what is made crime. Made crime کیا ہے؟ عموماً جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں، جو مینٹلی ہیلتھ جن کے ایشوز ہیں، ان کے ساتھ یہ میڈ کرائم یہ کرائم ہے، لیکن میڈ کرائم ہے. میڈ کرائم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ڈسیبل جو لڑکا یا لڑکی ہے، مرد یا عورت ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کا دوست بن جاتا ہے، حقیقی دوست. آپ نے آپ کو they pretended to be their real friend, but basically they became friend because they want to grab hold of take the control of their finances. تو وہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو فائنانسز ہوتے ہیں وہ ان کو فرینڈ بن کر ان کی جو ان کی جو انکم ہوتی ہے، ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں اس کے پیسے کو جو ہے وہ ان سے خود، چونکہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہی ان کے پیسے ڈرا کرتے ہیں اور اس پیسے کو وہ خود استعمال کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی کچھ لوگوں نے ان کے اپنے نام کروائی ہیں. یہ ہے مختصر سا ایک میڈ کرائم کی ڈیفینیشن. تو جی اگلا جو کوشچن ہے وہ ہے، اچھا جو آپ نے ویسے شیئر کر دیا ہے کہ what are its main goals، لیکن مزید تفصیل جو آپ نے گولز جو ہیں آپ کے، وہ اس کو اگر آپ بتانا چاہیں تو اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں. جی ہاں، ہمارے جو گولس ہیں اسپیشلی گلوبل پیس جرنی،
what is Global Peace Journey? It's international. It's International Day for Peace and Harmony in the world, which is celebrated on 21st of September all over the world. हर सालों साल ये जो है ना अमन का दिन होता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से. तो मैंने 2017 में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है जिसका नाम है ग्लोबल पीस जर्नी. So we organize an event where we get people from different schools, religious leaders, community leaders, the police again, we involve the police, MPs and Consulate of Pakistan and other dignitaries to sit on one platform and talk on the peace. And it is very, very important today that what is happening today inside UK or around the world, we need to get together with all the faiths like Christians, the Jews, the Hindus, the Sikhs, and other community to sit down and talk and try to create peace and harmony within their cities and protect one another in their problems, etc. Yeah, Global Peace Journey, yeah. So we had 2 events so far. One was in 2017. And the last one we had was in 2022 in Tong Park Hotel, where we had over 200 people who attended. And mashallah, it was very successful, and they want me to continue with Global Peace Journey programs, which we are thinking of doing, inshallah, in mid-January or February. अच्छा, तो वैसे तो आपने काफ़ी सारी बातें जो आपने इंट्रो में भी बताई हैं, लेकिन चूँकि क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं तो उनको मज़ीद जो है फर्दर उसको तफसील में बताने के लिए फिर आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ डू यू हेल्प कम्युनिटी किस आपने पहले बता दिया है, लेकिन मज़ीद तफसील आप बताना चाहें कि कम्युनिटी को किस तरह से हेल्प करते हैं. कुछ तो बातें आपने बताई हैं, लेकिन मज़ीद जो है आप अगर आप कोई शेयर करना चाहते हैं तो. Shah Saab, again, your question, right? How do we get involved and how we can help the community? There are so many services which are available for all the communities, which are being offered and financially are being offered, and our community does not participate or be neglected. So, for example, Council for Mosque. Now, every year they have so much funding for events, well-being. Now, today, right, they have been offered on the link from the government to safeguard their places of worship with fencing, alarm system, security system. And these are the things our community needs. And we want to help our community, and I go out my way and I make sure my community, the Imam Bargah, the Masjid, they get all the information which can help our community. तो कम्युनिटी का रिस्पांस क्या है जो जितना भी आप कम्युनिटी को आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी की भी कोई जिम्मेदारियां होनी चाहिए. क्या कम्युनिटी आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? आपके जो गोल्स हैं उसमें वो मददगार साबित हो रहे हैं? यकीनन ताली दोनों हाथों से बजती है, तो आप तो एफर्ट कर रहे हैं, तो क्या कम्युनिटी भी रिस्पांस करती है? Shah Saab, is a very good question, but a very difficult question. I wish our community had more leaders like myself, but unfortunately our community has no appreciation. As I gave a great example, my involvement with the West Yorkshire Police is whenever we have any issues, our West Yorkshire Police will stand by me because I am part of the organization. And we do have, right, our communities which are neglecting these, and they do not appreciate, right, the work I am doing, which is for the community, to safeguard the community so they get the information, whether it's the funds
or whether there are activities which are taking place. I want my community to understand we need to get involved, right, with the other community and communicate with them so we can get also the share of the community fundings and events which take place, so we are involved. But our community, honestly, truly, I'm speaking my heart, our community does not appreciate at all, or our I don't know how to say the word. I would just simply say our community and our centers, they do not appreciate anything at all. But I want to make sure that our community still, with my help, I want to make sure that I can share the information with my community and help them much as possible. तो कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ज़ाहिर है आप तो काम कर रहे हैं आपकी तरफ से, लेकिन मज़ीद क्या किया जा सकता है ताकि कम्युनिटी इन्वॉल्व हो? जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, आपके जो बाजू मजबूत नहीं होंगे। बेशक आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, आप पुलिस के साथ हैं, आप NHS के साथ हैं, आप प्रोफेशनल्स जो हैं आपके उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी कम्युनिटी साथ नहीं देगी तो आप कैसे इसको आपने जो प्रोग्राम है, आपका एजेंडा है, इसको कैसे फॉरवर्ड करें, ले जाएंगे? Again, good question, Shaji. आप क्या कर सकते हैं? Shaji, that's a very good question. Again, mostly we, the three Imam Bargahs inside Bradford, they don't get involved. We have to ask for their permission. Say, for example, recently there was a few activities at the weekend took place at Bethel Camp. Firstly, they asked, right, Husainia, they asked one of the centers, because which is quite big, so if they can actually place the event there, so it's convenient for everybody in Bradford. But we have to go through the committees. But community overall, community do attend our programs, and they know they will benefit. For example, recently, last year, we did a food bank inside city center, which was organized by 313 organization, and we served, right, over 1,000 people in my Ramzan. And second event we took was took place. I was at one of the local community centers where we did a medical checkup, where we had professional people, doctors, we had nurses, people to take your dietitian, we had ear specialists, we had dentists. But mashallah, we had over 200 people from the community who attended and benefited. But if we can have our centers to participate and give us the space and time, rather than we going outside looking for location to cater this program, I think, right, that the centers, they need to look at, right, that these are the needs, and we are creating and we are actually financing from ourselves, right, so the community can benefit. अच्छा, आपने बात किया कि कमेटी जो है उसमें शायद उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है ऐसी बातों के लिए। तो बैतुल में जो प्ले हुआ है उसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया है, और काफ़ी जो 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 लोग जिन्होंने ये प्ले परफॉर्म किया है वो भी काफ़ी खुश गए हैं, और आइंदा भी वो इस तरह के प्लेज यहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। लेकिन एज यू सेड, वी डू नीड अ बिगर स्पेस, क्योंकि बैतुल में जो गुंजाइश है वो कम है इस तरह के प्लेस के लिए, कि उनको परफॉर्म करने के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है। तो लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और प्ले जो है वो जो उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है उसकी बहुत अच्छी फीडबैक है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी अफराद
एक स्टोरी पढ़ते हैं, मसलन कुरान पाक में पढ़ते हैं, हदीस में पढ़ते हैं, आइमा के ज़ुबानी जो हमारे जो पास जो बातें आती हैं, लेकिन जो वो लोग पढ़ते हैं उसका इतना असर नहीं होता है। जो बातें एक प्ले के ज़रिए ज़हन नशीन होती हैं या बच्चों को इसका इसके ऊपर असर होता है, ये एक डिफरेंट एक चीज़ होती है। इससे इससे बहुत ही लोग इसको याद रखते हैं, कई सालों ऐसी बातें याद रखते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए, प्लेस जो है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि Shah Sahab, may I speak? Shah Sahab, may I जी क्या speak? क्या आपने जी जी Shah Sahab, I fully agree with you. These are the we need more space, and our Imam Bargah centers have that space. And if we neutralize this, right, we can educate our children, our sisters, our mothers, rather than the programs what we do as a global peace journey, 313, and our Shia professional network. We have to hire centers, and which is very, very sad when we have a space rather than paying other centers. And it's not small Mount Shaji, and which again is for the community, for the awareness, for education, and do programs. Say, for example, food bank. We can do food bank right from outside our centers, but we are not allowed. So we have to go to council to ask for permission to allocate this space so where we can actually cater people, homeless people, with food, hot food, and hot drinks. So our centers need to look into it. That, like you said earlier on, is this only for Shia community? Shaji, no. When it comes to food bank, it's for all the community. It's for homeless people. We have immigrants, and due to today's financial problem people are facing, people are suffering. People are actually going to food bank side from all the communities to meet end of the week, right? The cost of food. अच्छा, कम्युनिटी का रिस्पांस जो है वो जो मैंने वैद खान के हवाले से सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी अटेंडेंस थी, कम्युनिटी रिस्पांस करती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कमेटी जो है मेम्बरान हैं, अच्छा कमेटी मेम्बरान को आगाही उनको ऐसी बातों को के लिए इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि वो अंडरस्टैंड करें नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी रिस्पांस कर रही है, पैसे जो है वो दे के ऐसे प्रोग्राम में वो शमूलियत कर रहे हैं। लेकिन अगर कमेटी जैसे आपने कहा है कि वो अलाउ नहीं करेगी तो फिर जो कम्युनिटी वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। तो क्या किया जा सकता है इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको इनकरेज करने के लिए? हालांकि अब चूँकि एक दौर था जब कुछ हमारी एज के लोग होते थे कमेटी में, उनकी जो सोच होती थी वो पुरानी सोच होती थी, और जो कुछ उन्होंने अपने दौर में जो सीखा, अपनी उस दौर की बातें जो उनके ज़हन से उसके मुताबिक वो करते थे। लेकिन अब दौर चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी जो अप्रोच है वो भी इस दौर के मुताबिक होना चाहिए। तो क्या क्या किया जा सकता है कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए, उनके जो मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या और कोई लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी क्या कर सकती है? Shah Sahab, again, right, our committees are very difficult to break through. When we tell them we want to do the program, they have to go through different channels, and they have so many clauses and conditions. End of the day, I'm not accusing anyone, but I think the committees, they should be more happy that these people are bringing new events and new programs into the center. So I wish they can think this way. But when we share our ideas, it's put on side.
And one thing I love, right, and I highly appreciate Battle Camp of Bradford. Mashallah, they always participate with us. And now recently we are thinking of doing on 24th of December, food bank, food bank. And mashallah, one of the committee members, he came very happily with me and he said to me, you can use our kitchen. You can use our kitchen, and inshallah we'll have volunteers will participate and serve the homeless people on the day of your event. So there are people like there is a Battle Camp who is always willing to support and willing to listen to us. But I wish other centers can also look into it, right, rather than putting on side and which puts you off. You know, I'm speaking my mind. They put you off. They just neglect you. They think, you know, what's the use of thing? Why are you doing this for? But Shaji, we need to get involved. We want community to understand who we are. What is our mission? And how we can help other communities. It's very important. Involvement is very important. That our community involves, right, in the activities which are needed today. तो आपने जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सी बातें आपने इंट्रो में डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मज़ीद तफसील की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे की प्रोग्राम्स हैं जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सबसे पहले जो है ना माशाल्लाह Sujad Hussain is running the classes which are called financial master classes, and the next one is going to take place at Battle Camp on the Sunday the 18th of December, which is very important advice on mortgages, your taxation and other related businesses. So it's very important that, you know, these our classes take place which are free of charge, and we want our, you know, people to be involved and take, you know, good and which is very helpful to the community. अच्छा, डेट दोबारा से बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स हैं जो शामिल हो सकते हैं आपके गुफ्तगू सुनकर, थोड़ा सा दोबारा से डेट बताएं और टाइम और वेन्यू बता दें ताकि जो और मज़ीद अफराद जो हैं वो शामिल होना चाहते हैं वो आसानी के साथ शामिल हो सकें। जी, ये financial master classes will take place on the Sunday the 18th from 5 p.m. till 7 p.m. at Battle Camp Bradford, and we invite all the community. 14 है या 18 है? I think it's the 14th, Shaji. I think it's 14th. 14. I think it's 14th. I've got the timetable here, but मैंने जो सुना था वो 14 सुना था, इसलिए मैं 14 हाँ, फिर 14 होगा, GT 14 को होगा। क्योंकि संडे, ये आने वाला संडे जो नेक्स्ट संडे होगा, हमें इसके बाद जो आने वाला संडे होगा, अभी तो ये अभी जो संडे आ रहा है नेक्स्ट, ये 14 है। हाँ, 14 को जी। So it's taking place at Battle Camp, and mashallah, Sajjad will support the community with their questions and help them with the application forms, anything regarding finances. He's the right person in our community. To me, I am very blessed to have got a professional person like Sajjad Hussain. अच्छा, यह सज्जाद हुसैन ही जो हैं वो प्रोग्राम को जो है वो रन कर रहे हैं, जो बैतुल कायम में 14 तारीख को हो रहा है संडे को, और कम्युनिटी को इससे क्या आप समझते कि क्या फायदा होगा? Shaji, as I said to you, it's all regarding people who are in businesses, especially people have a problem with the tax credit. People have, right, you know, like we have people who are businesses, taxi drivers.
we have firms, right, where Sajjad can help them to save lots and lots of money through. There are so many ways of saving money and saving taxes. So it's very important. Sajjad will verify on the day how he can help the community with his services or masterclass. ठीक है, तो ये नाजरीन, ये 14th of December संडे जो है आ रहा है, इस संडे को बैत कायम इस्लामिक सेंटर BD2 145 बोल्टन लेन में हो रहा है, BD2 480। इसमें ये प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप ब्रैडफोर्ड के अतराफ में भी अगर रहते हैं, कहीं हैलिफैक्स, ड्यूसबरी, वेकफील्ड, हडर्सफील्ड, कीथली, तो आप इस प्रोग्राम में आप शामिल होइएगा। और जैसे कि हमारे गेस्ट ने बताया कि ये बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल जो है एडवाइस आपको मिलेगी, क्योंकि जो सजाद साहब की बात कर रहे हैं ये खुद एक प्रोफेशनल हैं और अकाउंटेंट, जैसे बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके पास बहुत सारी मालूमात हैं और आपके बेनिफिट के लिए ये काम इन्होंने प्रोग्राम रखा है। तो आप ज़रूर शामिल होंगे तो ये प्रोग्राम कामयाब होगा और इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। लिहाजा गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शमूलियत अख्तियार करें। और जैसे कि आपने हमारे गेस्ट ने बताया कि ये फ्री है ना, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे ना, फ्री है ना प्रोग्राम? ये फ्री है। हाँ जी, तो फ्री प्रोग्राम है, तो इसमें जो आप ज़रूर शामिल हों और इससे आप फ़ायदा उठाएं। तो इसके अच्छा, ये भी जैसे कि आपने बहुत सारी बातें जो मैं बता दी थी कि फूड योरसेल्फ आपने बता दिया है, लेकिन मज़ीद आगे तफसील के साथ आप बताना चाहते हैं कि आप किसको सर्व करें? शिया कम्युनिटी को ही फ़िलहाल आपने जैसे बताया कि सर्व कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर आप रोशनी डालना चाहते हैं? Shah Sahab, I just mentioned to you earlier on Global Peace Journey. We involve all the community, all the sectors, the council, West Yorkshire Police, NHS, Gurdwaras, Imam Bargas. Then we have other sectors who are involved. So we make sure that everybody is involved. So we like to involve everybody. But again, you mentioned this program, the Shia Professional Network. We want to try to cater our own community because our community needs help right now. So anyway, we will be involving other communities in future once we set up our doors open. Inshallah, we'll be welcoming other community to participate. फिर अगेन बातें तो आपने बहुत सारी बता दी हुई हैं, लेकिन व्हाई डू यू फोकस नेटवर्किंग? इससे नेटवर्किंग जो है उससे आप क्या आपको फायदा हासिल होगा? Shahsab, networking, you're a very professional person yourself. Without networking today, there's no communication. Networking is communication. You develop friendship, you meet people, you meet professional people, and then you exchange your telephone numbers, your emails, and you become more closer to understand or if they can help you in any kind of way with your projects like Shia Professional Network. So I go to so many meetings. We have PMI, Professional Muslims Institute, and I met absolutely brilliant people who are professional in every field. So without communication, you don't know the potential of people, and you don't know if this person can be useful in your programs. So we can say, for example, Shadi, you do remember Imam Ali alayhi salatu Islam conference. We brought a lady called Gillian Arnold.
Now, see, we met Gillian at one of the events, and me and Sajad were very inspired, and especially her involvement with the children. So we thought it's a fantastic idea that if she can give us like 10, 15 minutes and highlight the importance. And she, she gave us a precious time, and we highly appreciate. And inshallah, very soon, she will be joining you with the interview at your Roshani program. इंशाल्लाह। तो मेरा भी यही मकसद होता है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कम्युनिटी में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करूँ, अगर डिसेबिलिटी के हवाले से है या हेल्थ मैसेजेस हैं या आज जैसा प्रोग्राम हो रहा है कम्युनिटी का, तो इसमें मेरे भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अच्छा, आपने एक बात की है पिछली गुफ्तगू में कि होमलेस जो लोग हैं उनको आप यू प्रोवाइड मील टू होमलेस पीपल। तो इसके ऊपर थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही तफसील के साथ आप बताएं कि ये होमलेस कौन से होमलेस हैं, क्या हमारी कम्युनिटी में भी होमलेस हैं या जैसे जनरल लोग होमलेस होते हैं और सड़क पर ही रहते हैं, कहीं उनको जगह मिल जाती है तो वहीं वो सोते भी हैं, वहीं वो रहते भी हैं और खाना भी जो है कुछ चैरिटीज उनको खाना भी सप्लाई करती हैं। तो किसको आप कौन सी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, होमलेस की थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं और हेल्प किस तरह की हेल्प कर रहे हैं, किस तरह का मील प्रोवाइड, हॉट मील है, पैक मील है, कोल्ड मील है, कैसे किस तरह की तफसीली तौर पर आप इस हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं होमलेस के लिए। Shah Sahib, it's a good question. Homeless means people who do not have a shelter, people who sleep in the streets, people don't have facilities. For example, food. Obviously, without food, a person cannot survive. So these people are scattered all over in the cities, in every city, and these people. Are you targeting people in Bradford only or in the surrounding cities as well? Inshallah, we will continue this our mission inside Manchester, and we have a group, right, of very professional people who will participate in London, Birmingham. So this food bank drive will be in every city on our behalf. But going back to homeless, so these homeless people are mostly people who are drug addicts, who have no family, and especially no shelter. So what we do, right, we try to make sure they keep warm, so they have some food and hot drinks. So we give them packed meal, which is hot, and provide them with soup, hot soup, tea and coffee. तो ये आपके पास डेटा कहाँ से आप हासिल करते हैं होमलेस का, कहाँ से आपको पता चलता है कि होमलेस कहाँ पर हैं, कहाँ पे आपने फूड सप्लाई करना है, और इसकी तफसील बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि होमलेस जो लोग हैं उनको जो आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हॉट मील प्रोवाइड करते हैं, आप ये पैक मील प्रोवाइड करते हैं, इसकी तफसील बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले, ताकि मुझे यकीन है कि जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं ये इसमें कास्ट इन्वॉल्व होती है, और ये अगर कम्युनिटी को इस बारे में मालूमात मिलती हैं कि ये होमलेस की किस तरह से मदद की जा सकती है, हॉट मील या पैक्ड मील को लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है, कहाँ से डेटा हासिल किया जा सकता है लोगों के जो होमलेस लोग हैं उनका, इसके ऊपर आप हमें थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि
ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہوں اور جو آپ کی آئندہ فائنینشیل سپورٹ بھی آپ کو وہ دے سکیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کیا پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں, کس طرح کے, کون لوگ جو ہیں وہ ہوم لیس ہیں, اور ان کا ڈیٹا جو آپ نے جو کلیکٹ کیا ہے کہاں سے, کس جگہ پہ آپ ان کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, کہاں سے آپ کیسے ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں تفصیلاً جو ہے اگر آپ بتا سکیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. جی جی شاہ صاحب, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ آج جو صورت حال ہے ہر انسان سفر کر رہا ہے. تو یہ جو ہوملیس لوگ ہیں ان کا کوئی خاندان نہیں ہے, نہ ان کے بیٹے ہیں, نہ ان کی بیویاں ہیں, ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, نہ ان کے گھر ہیں. تو یہ سڑکوں پہ سوتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے نا ڈیلی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ بھی انسان ہے, ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی غریب مسکین کو مدد کرنا یہ ہمارے مذہب کی پہلی شرط ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں, یہ ڈیٹا جو ہے نا ہمیں کاؤنسل سے ملتا ہے, تو ہم ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ایریے میں ہوملیس ہیں. تو ہم موسٹلی جو ہے ہوملیس وہ they are allocated in city center and they hang around in city park. So these people are always looking forward somebody to offer them some kind of they ask for money. So what we do, rather than giving money, we provide them with the food, because we don't want that money to be used right for drugs. We want that money right so they can live, they can have be healthy. So it's very important that our community, right, looks into these homeless people. We have people all over the world who are homeless, and there are organizations all over the world, right, who are helping homeless people every day. We have our few organizations in London who are doing absolutely tremendous job every weekend. They serve right over 500 to 600 meals to homeless people. And similar takes place in Manchester. So in Bradford, I want our Shia community again to be involved, because we have our other brothers in faith who are doing absolutely tremendous work, Shaji. And I feel, right, that we are believer of Elibat, and Elibat gave us such a great lesson to look after poor people, sick people, and homeless people, and feed them. So this is the reason why we do food bank. So I want our community to participate, and if they can financially help, it'll be it'll be blessing upon them from Allah Subhanahu wa Taala, that they are doing something for humanity. ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ٹیم میں شامل ہوں گے, اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے معامل کریں گے. تو یہ بتائیے کہ جو میل ہے یہ کب اور کتنے, کیا ڈیلی آپ پرووائڈ کرتے ہیں, ویکلی پرووائڈ کرتے ہیں, منتھلی پرووائڈ کرتے ہیں, کیا how often do you provide the meal to the homeless people? Shaji, we have decided, right, to do it 4 times a year, because we are not charity, we have no funds. We actually, all the friends and relatives and these professional people on our Shia network are the people, right, who participate financially, and we go out there to purchase food and make sure that homeless people 4 times a year on behalf of this Shia community are being served. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ کو فوڈ جب آپ ڈلیور کرتے ہیں تو کسی ایک جگہ میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں, کسی مخصوص مقام پر ان کو انوائٹ کرتے ہیں,
या जहाँ पे वहाँ किसी जगह में वो जब वो उनके अपनी रिहाइश होती है या बाहर ही स्ट्रीट पर ही होते हैं, लेकिन क्या खुद उनको तलाश करके वहाँ प्रोवाइड करते हैं या उनको किसी एक मखसूस जगह में बुलाकर जो है वो मील प्रोवाइड किया जाता है? ये शादी मखसूस होती है जगह, और ये स्पेशली सिटी सेंटर में होता है, सिटी पार्क, क्योंकि वहाँ जो ना हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं, और ज़्यादा जितने हैं ना होमलेस पीपल, they all hang around in the area. So we have to put application form to the council to provide this space, so where we can place a marquee. So under the marquee, right, is a shelter where people can stand for a few minutes, and we can serve them right with hot meals and drinks. So it is in the city center, so we don't go out looking individually. So we are in an area where everybody's welcome and everybody's passing by. And sometimes we offer food to other people who are walking by. If they come to us and ask for tea or coffee or food, we welcome them. So it's not just homeless people. Plus anybody on the day comes to us, we'll serve them. अच्छा, ये बताएं कि क्या आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है होमलेस को अप्रोच करने के लिए, या आप खुद अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, एक तो परमिशन लेनी पड़ती है, मगर हम अप्रोच किसी को नहीं करते। जैसे मैंने कहा है कि वी हैव अ स्टॉल इन अ सर्टेन एरिया where 99.9% homeless people hang around during the day. अच्छा, ये बात, अच्छा बहुत सारी बातें आप कर चुके हैं, लेकिन मजीद चूँकि क्वेश्चन जो हैं वो मजीद तफसीलात की जो है वो ज़रूरत है कि हाउ डू यू वर्क विद अदर प्रोफेशनल। तो आपने ये बातें भी आपने बता दी हुई हैं, लेकिन मजीद तफसील अगर बताना चाहते हैं कि उसके ऊपर कि आप जो प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके साथ मजीद जो कैसे रवाबत आप करते हैं, और उसकी तफसील बता सकते हैं आप? ये आपका सवाल जो है ना कि हाउ डू यू वर्क विद द अदर प्रोफेशनल्स, एंड ये ग्रुप इसीलिए बनाई गई है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं इस ग्रुप पे एक दूसरे को मदद कर सके। जैसे हमारे ग्रुप पे माशाल्लाह इस वक्त हर रोज़ हमारे पास 5-6 जो ना क्वेश्चंस आते हैं, जो उनकी मिसाल है कि कोई एक इंसान ने टेक्स्ट किया है कि अच्छा जी मुझे मॉर्गेज की ज़रूरत है, डू यू हैव एनीबॉडी ऑन द ग्रुप हु कैन हेल्प मी विद मॉर्गेज? We have people right where they're asking, do you know any immigration officer who can help me? So these are the professional people in our group who can help our community with their advice and with their services. So it makes it a lot easier that we are working along each other and passing on the message of their involvement to the community and paying back to the community in a respectable way. So we have teachers, we have doctors, we have lawyers, immigration officers. We have almost all professionals in the field, which is I'm so happy with this group that this is for first time ever such a group is being organized with the professional bodies. So we are there. We want their participation and our community to participate with them for their services and for their advice, which is very important that we have a link. So we have created this link for our community to communicate and look at so we can help them. So these professional people can help them and help one another. वक्त जो है वो तेजी से गुजर रहा है, बस हमारे पास 2-3 मिनट हैं और तो यकीनन आपने बहुत सारी बातें जैसे मैंने कहा कि आपने कवर की हुई हैं, लेकिन are there any challenges that you think you want to highlight?
charity. Challenges. Shadi, we will face so many challenges. You can't please everybody. Everybody has their way of thinking, and mostly the challenges we can have are from the our centers. And the second one, right, people who this I don't know how to say the word, right. There's always some jealousy and bit of जिसको कहते हैं ना कि they're not happy that you're successful. We will face these challenges, but I have been doing this for many years, and inshallah, I need your du'as, I need all the audience du'a. If Mawla Pak gives me the strength and the health, inshallah, will cater my community whether they appreciate me or not. And my services are truly from my heart. So the challenges are... वक्त खत्म हो रहा है, और एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा आप उसके ऊपर रोशनी डाल दें. बिल्कुल हमारे पास 1 मिनट है और आप उसको मुख्तसरन जवाब दे सकते हैं. हाउ डू यू नो यू आर मेकिंग डिफरेंस? Well, already, Shaji, as I said to you, mashallah, we got over 250 people, and every day people are joining our group. And this, you have all the information, the contacts there of the services. So people are actually opening the eyes, and the difference is already showing that the Shia professional network is working, and they are very active. अच्छा, क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन अभी 1 मिनट और चले करते हैं. फ्यूचर के लिए आपकी जो थोड़ी सी रोशनी डाल दें, आपके फ्यूचर में क्या प्लानिंग हैं, क्या मिशंस हैं आपके, मुख्तसरन बताएं ताकि हम टाइम के मुताबिक हम इसको ख़त्म कर सकें. Shaji, inshallah, we will progress in future. We'll have more activities, and we need participation from the community to encourage us, so we can go forward. And going forward, we want to show that our Shia people have a potential. अच्छा, again, last question, because मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी important question है. ये आप इसको भी मुख्तसरन जवाब दें. How can others join Shia Professional Network? Shaji, right, we are on WhatsApp group, and mashallah, the word is spreading. And secondly, inshallah, very soon, right, we'll be activated, right, on website. So we will inform the community to participate and join us. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी. आप चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं समझता था कि शायद हम मज़ीद गुफ्तगू हमें करना थी, लेकिन चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है. और ऐसी कोई बात जो आप समझते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है, एक लास्ट मैसेज आप जो देना चाहते हैं, अभी आपके पास ये आखिरी जो है वो बात करने का मौका है. The only thing I am asking our community to participate is very important. We are here to support the community and help our community, and their participation is very, very important. Don't look at me, look at the work we are doing. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी. अब्दुल माजिद साहब, आपने वक्त दिया है और जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी जो मालूमात मिली हैं, इसमें मज़ीद आपके साथ कोई लोग अप्रोच करेंगे और ताउन करेंगे. और कीप गुड वर्क, और बहुत अच्छा काम है. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसकी. और आइंदा इंशाल्लाह आइंदा भी मज़ीद जब आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपसे मज़ीद रब्ता करेंगे और मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे. अभी इजाज़त लेते हैं जी. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है. मुझे दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.